Assalamu alaikum. The third topic in the diseases of the cardiovascular system is coronary artery diseases. The coronary circulation. Look at the picture here and you will see vessels arising from the base of aorta here and here. This one is right coronary artery. ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, इनके ग्रूव में ट्रेवल कर रही है and it is going towards the right side, and then from the right side, from the edge of the right edge of the heart to back side of the heart here. The second one is left coronary artery arising from the aorta, passing between the aorta and the pulmonary artery, and you see it here between the left atrium and the left ventricle. It is going downwards and towards the left side. While going downwards, it gives anterior descending branch which goes to the apex of the heart, and the left artery which is now going backwards around the left edge of the ventricle to supply the posterior surface of the heart. These two arteries provide 70 milliliter per minute per 100 grams of the cardiac tissue, or 225 milliliter of blood per minute to the heart. During sternus, now you see these blood vessels are running on the epicardial surface of the heart, and then their smaller arteries are going to penetrate the substance of the heart to reach the endocardial surface. During sternus exercise, this blood flow, 225 milliliter per minute, increases 3 to 4 times, and the workload on the heart, that is the cardiac output, has to be increased at least 6 to 7 times per minute, and this is where we see that the blood supply is not increasing to the extent as much as the workload on the heart has increased. Now you would be thinking that the inner surface of the heart is getting a lot of blood supply from the chambers of the heart. वहाँ blood मौजूद है, वहाँ से oxygen मिलती है, nutrition मिलती है. No, only the inner 1 by 10 millimeter. 1 by 10 कितना होता है जरा सोचें. Only the inner 1 by 10 millimeter of the endocardial surface can obtain some nutrition directly from the blood inside the cardiac chambers. Others are being supplied by the proper blood vessels within the heart. पहले आपने ये डायग्राम देखनी है और फिर ये डायग्राम हम स्टडी करेंगे. The epicardial blood vessels are running over the surface of the heart. Their branches penetrate the substance and then join again to form a blood vessel at the endocardial surface. The branches of one blood vessel join the end branches of the other blood vessel in between the areas, in these areas here, here and here, just like you see it here and here and here. So these are the blood vessels running on the epicardial surface. They send their branches down into the muscle, and these branches then join each other at other sites to make anastomosis. This is whatever you are seeing here. This anastomosis, you can say, is giving supply from this artery and this artery. They are joining each other, and this can supply the area together at one site. And then there are these branches,
that will finally end up into the veins, and the veins will go back to the area where they are destined to. So here you see the normal scheme of the arterial supply and the venous drainage of the heart. The right and left coronary arteries divide into arterioles, then they divide into capillaries that drain into the veins. These veins drain into the coronary sinus or in the anterior cardiac veins, and that is drained into the right atrium. Apart from that, extracoronary arteries can sometimes supply their blood to the coronary arteries if some of them are blocked by their arterioles, which communicate with the arterioles of the coronary arteries. Now, coming to the venous drainage of the coronary blood supply, some of the arterioles drain to the arteriosinusoidal vessels that take blood to the heart chambers. Some of them go to the arterioluminal vessels that drain into the heart chambers, and some of them that have divided into the capillaries are going to enter Thebesian veins, which drain into the cardiac chambers. Let us very briefly look at the control of coronary flow. That is, we are going to enumerate it in this slide. Number one is the metabolic control, and this is showing you decreased myocardial oxygen because of metabolism, leading to change in potassium ATP channels, nitric oxide production, and adenosine, and all of them have got a negative effect on the smooth muscle fibers of the coronary blood vessels arterioles. Then come the other metabolites, and these are hypoxia, PCO2, hydrogen ions, and potassium, and all of them have got a negative effect on the contractility of the smooth muscle fibers of coronary arterioles. This is all about the metabolic theory. And then you talk about systolic compression. This is a mechanical effect. When the heart muscle contracts, it causes compression of the blood vessels, their diameter decreases. It has got nothing to do with the contraction of smooth muscle fibers. When the diameter decreases, blood supply is decreased. Then there is a myogenic mechanism of autoregulation of the coronary blood vessels, and when there is increased blood supply, the stretch on the smooth muscle fibers causes them to constrict, and when there is decreased blood supply, the laxity of the decrease in the pressure on the smooth muscle fibers producing laxity of the coronary blood vessels causes them to relax and produce more blood give more blood to the tissue. Then there is a nervous supply, and the nervous supply, there is sympathetic nerve and the parasympathetic nerve. The sympathetic nerve through its alpha receptors causes increased vasoconstriction, whereas through its beta receptors it causes indirect vasodilation due to metabolism of the heart, and then the parasympathetic has got vasodilator effect on the circulation in the heart. Let's start with the coronary circulation. Coronary circulation means the blood flow to the heart. We are giving 5% of the whole blood that is getting out of the heart per minute to this organ, which is supplying this cardiac output to the body. So आपके पास 5 लीटर्स ब्लड है जो पर मिनट आप एओर्टा में भेजते हैं, उसमें से 5% यानी 250 मिलीलीटर जो है वो ये वाली आर्टरी, ये देखें, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और ये राइट कॉर्नरी आर्टरी, इनसे निकलकर सीधा हार्ट में पहुंच जाता है. 250 मिलीलीटर्स इज गोइंग टू द हार्ट per minute. And then if there is an need of increasing the blood flow, the
activity of the heart, as soon as it increases, you increase the heart rate or you increase the stroke volume, there is more oxygen consumption by the heart, and this produces hypoxia and this produces vasodilation. Moreover, when the ATP is not available, ADP is broken down. When ADP is not available, AMP, adenosine monophosphate, is broken down into adenosine and phosphate. So this adenosine is now coming out of the heart muscle and it enters the blood vessels. As soon as it enters the blood vessels, it produces vasodilation, so that if there is less energy supply to the heart, like less ATP in the heart, this is going to produce local vasodilation. Then there is sympathetic control. Of course, the blood vessels that are supplying the heart have innervation from the sympathetic nervous system like all other body blood vessels. But they have got alpha receptors. But the major issue is that as soon as the activity of the heart increases by sympathetic stimulation, metabolites that are produced in the sympathetic stimulation produces much larger amount of vasodilation as compared to the vasoconstriction that occurs by the sympathetic nerves. चलें इस बात को उर्दू में भी कर लेते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स इन ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती हैं वो बाकी तमाम बॉडी की तरह इनमें कंस्ट्रिक्शन पैदा कर सकती हैं, लेकिन चूंकि सिंपैथेटिक नर्व्स के साथ ही हार्ट मसल के लिए जो पैगाम आता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का, वो होता है इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उनसे इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर खर्च होती है कि वहाँ पर हाइपोक्सिया हो जाता है और वहाँ पर एडिनोसिन रिलीज हो जाती है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से जो ब्लड फ्लो कम होना था वाजो कंस्ट्रिक्शन से, वो कहीं दूर रह जाता है और जो मेटाबोलाइट्स हैं दे कॉज वेजोडाइलेशन। So the mechanical effects of the contraction of the cardiac muscle onto the lumen of the blood vessels and the blood flow in the heart. Mechanical compression during systole produces reduction in the blood flow because the blood vessels are being compressed by the contracting cardiac muscles, and the blood flow increases during diastole, as you see in the following diagram. Here you see 225 milliliter of the blood per minute is flowing in the heart, and this goes down to almost 0 millimeter of mercury during isovolumetric contraction. Then a little amount of increase in the blood flow during systole in the left ventricle because the aortic blood volume has increased and the blood is pushing open the coronary blood vessels. Also, although the ventricle is contracting, but pressure in the aorta pushes a little amount of blood into the ventricles during systole. Then comes isovolumetric relaxation, and during this period you will see there is increased blood flow to the left ventricle, and then gradually, with the decreasing pressure in the aorta, the blood flows gradually into the coronary arteries during diastole and reaches an average of 225 milliliter per minute. So let us talk about the variations in the coronary flow and the factors that produce these variations in the coronary flow. The First of all, you know that the heart extracts 70 to 80% of the oxygen from the blood at rest. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपका ब्लड आर्टरी में आता है तो हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट होती है और जब वो वापस जाता है तो तकरीबन 75% सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की ख़त्म हो चुकी होती है और सिर्फ 25% सेचुरेटेड होती है हीमोग्लोबिन इन द वेन्स दैट ड्रेन द हार्ट. Now, with this extreme oxygen consumption at rest, when you need to increase the blood flow और ऑक्सीजन सप्लाई, तो ये नहीं हो सकता कि हार्ट में से मजीद ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन में से ले ली जाए.
उसमें बहुत कम गुंजाइश है. So when metabolism and oxygen consumption is increased by increasing the activity, this is provided by increasing the blood flow. यानी अगर आपका blood flow बढ़ेगा तो आपके पास ऑक्सीजन आएगी जो आप increased activity में इस्तेमाल करेंगे, वरना आपके पास deficiency of oxygen हो जाएगी. The caliber of the coronary vessels and the rate of the coronary blood flow is influenced by not only by pressure changes in the aorta but also by chemical and neural factors. ये वही चीज़ें हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया है कि एओर्टा में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो करता है, जैसे कि डायसली में 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी के दौरान द ब्लड इज फ्लोइंग इन द कोरोनरी वेसल्स. लेकिन जिस वक्त आपका सिस्टली हो रही होती है उस वक्त बावजूद इसके कि एओर्टा में प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी तक पहुंचता है, लेकिन सिस्टोलिक कंप्रेशन ऑफ द ब्लड बाय द कार्डियक मसल उसको अंदर नहीं जाने देती ब्लड को इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. इसके अलावा द blood flow can be increased by chemical and neural factors. Apart from that, there is auto-regulation जो आपको मैंने बताया था. मायोजेनिक इफेक्ट जो डायग्राम में दिखाया था वो ऑटो रेगुलेशन है, और केमिकल और न्यूरल फैक्टर्स में से ऑटोनॉमिक जो फैक्टर्स दिखाए थे वो न्यूरल फैक्टर्स हैं, और जो लोकल मेटाबॉलिज्म में दिखाया था दीज वर द केमिकल फैक्टर्स. जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, द न्यूरल फैक्टर्स आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड यू सी दैट द कोरोनरी आर्टेरियोल्स are supplied by alpha adrenergic receptors and that causes vasoconstriction. The heart muscle is supplied by beta adrenergic receptors and the beta adrenergic receptors in the heart muscle, when you apply norepinephrine to them, heart rate is increased and the cardiac contraction is increased, force of contraction is increased. Both these things increase the production of local metabolites and cause vasodilation. That is, indirectly norepinephrine acts on the beta receptors, increasing the metabolism and produces the vasodilation. Whereas directly norepinephrine, when acts on the alpha adrenergic receptors, that would cause vasoconstriction. So let us enumerate the chemical factors that cause local vasodilation. Mainly it is the hypoxia and increased local concentration of carbon dioxide, hydrogen ions, potassium ions, lactic acid, prostaglandins, adenine nucleotides and adenosine. All of them act upon the blood vessels to cause vasodilation. The intracoronary injections of cyanide produce hypoxia, and that is solely responsible for increasing the coronary blood flow by 200 to 300 times. Whereas adenosine is another substance that is very much responsible for producing reactive hyperemia when the coronary artery is occluded. सो जब आपके पास हार्ट अटैक का केस आएगा तो चूंकि कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूडेड होती है उसमें, तो जब आप नाइट्रोग्लिसरीन देकर उसको रिलैक्स करते हैं तो एडिनोसिन इज द वन दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग रिएक्टिव हाइपरीमिया बाय वेजोडाइलेशन. Now let us look at the variations in the coronary blood flow with pressure gradients. आपको पता है F is equal to delta P over R. जहाँ भी blood vessel में blood flow होना है, delta P बहुत important चीज़ है. और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो vasoconstriction या vasodilation, जिससे कि हम denote करते हैं resistance to the blood flow, वो important है. Repeating, F is equal to delta P over R, we see that contraction of the heart, like the skeletal muscles, compresses its blood vessels. So you need more pressure to maintain the blood flow. So one item is, because the heart is a muscle and it is contracting within for zero point 0.3 seconds in every 0.8 seconds, the blood flow to the heart is decreased in these 0.8 seconds, and you need a high pressure gradient to maintain the blood flow. Gradient का मतलब है डेल्टा पी. हाई प्रेशर अगर
आर्टरी में भी हो और वेन में भी हो तो डेल्टा पी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर हाई प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो हो तो फिर डेल्टा पी हाई होता है. So we see that the pressure inside the left ventricle is slightly higher than in the aorta during systole. So no blood flows in the subendocardial portion of the left ventricle during systole. Now the left ventricle subendocardial portion is only getting its blood supply during diastole. अब सब एंडोकार्डियल कौन सा है? जो पेनिट्रेशन के बाद आखिर में जहां एंड आर्टरीज आ रही हैं, तो जहाँ पे पहले ऊपर की लेयर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल की वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मिडल लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इनर लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो जो एंड आर्टरीज होंगी उन तक तो कोई ब्लड पहुंचेगा ही नहीं. ठीक है. सो द प्रेशर इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल is slightly higher than in the aorta, so there is no pressure gradient between the aorta and the blood vessel that is supplying the inside of the left ventricle, subendocardial surface of the left ventricle. So there is no blood flow in the cardiac muscle during systole. अब जो डायस्ली हुई उस वक्त प्रेशर जो है वो आपका एओर्टा में अब ज्यादा है और लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है और -5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर पर पहुंच गया है. दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव गॉट अ डेल्टा पी ऑफ at least 100 to 80 millimeter of mercury throughout the diastole. Initial part of the diastole में 100 millimeter of mercury और late part of the diastole में aortic pressure is 80 millimeter of mercury. So delta P is very high here because the ventricular pressure is 0 to 3 millimeter of mercury. This produces good blood supply to the ventricular muscle during diastole. अब बात करते हैं सब एपिकार्डियल ब्लड वेसल्स की, जो बिल्कुल एपिकार्डियम के नीचे हैं. उन्होंने तो मसल जो है वो उसको इतना तो कंप्रेस नहीं कर सकता, उसका ल्यूमन बड़ा है और उसमें प्रेशर ज्यादा है, और जो उसकी एपिकार्डियल सरफेस के ऊपर जो मसल है उसमें प्रेशर इतना नहीं है. सो सब एपिकार्डियल लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल गेट्स some blood flow throughout the cardiac cycle because here the blood pressure or delta P is more as compared during the systole as well as in the diastole as compared to the subendocardial portion of the left ventricle. Now during tachycardia diastole is shorter. अब इतना सारा जो पीरियड था 0.5 सेकेंड्स का जिसमें डेल्टा पी आपके पास 100 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, वो टेकिकार्डिया में वो पीरियड छोटा हो जाता है. उसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल डिक्रीजेस और सबसे ज्यादा सफर कौन सा पोर्शन करता है? सब एंडोकार्डियल एरिया, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी हैविंग लेस ब्लड फ्लो. In aortic stenosis, much higher pressure is required in the left ventricle to eject the blood in aorta, increasing the oxygen demand as well. अब आपको आर्टीरियल पल्स वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस की डायग्राम देखनी है जहां पल्स प्रेशर दिखाया गया है. वहां पर आप देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एओर्टिक स्टेनोसिस इज नॉट हाई. The reason being वो 100 millimeter of mercury तक ही जाता है. The reason being that the aortic valve is narrow and the ventricle is pushing blood with great difficulty into the aorta. अब ventricular pressure जो है वो तो आपका 140 तक चला गया इस कोशिश में कि इस नैरो एओर्टिक वाल्व में से ब्लड किसी तरह एओर्टा में चला जाए. लेकिन एओर्टा में चूंकि ब्लड कम गया है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द एओर्टा इज लो. तो अब आपका डेल्टा पी पहले जो था लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान -1 था, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल अगर 121 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो एओर्टा 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था. अब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी यानी ज्यादा प्रेशर हुए जिसके जरिए वो ब्लड थ्रो कर रहा है इनटू द एओर्टा, और एओर्टा में प्रेशर आपके पास है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो आपके पास -40 हो गया डेल्टा पी. यानी कोई ऐसा प्रेशर मौजूद नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टिंग लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल के अंदर
जो ब्लड वेसल्स कंप्रेस हुई हुई हैं उनमें किसी तरह भी ब्लड को पहुंचा सके। अब आपके पास दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक प्रॉब्लम ये कि आपके पास डेल्टा पी नहीं है टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि उसे ज्यादा जोर से ब्लड पंप करना पड़ रहा है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में ड्यूअल इफेक्ट है। एक आपका डेल्टा पी बहुत नेगेटिव हो गया है, दूसरे आपकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ गई है, और दोनों चीजें जो हैं वो आपकी डिमांड मीट नहीं कर रही हैं। Now, the pressure difference of the aorta with the right ventricle and the atria is greater during systole than during diastole. हमेशा ही एओर्टा के अंदर जो प्रेशर है दैट इज 120 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, चाहे डायस्टली में हो चाहे सिस्टली में हो। राइट वेंट्रिकल और एट्रिया के अंदर प्रेशर तो +8 और मैक्सिमम वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में +25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। सो वहां पर डेल्टा पी अच्छी तरह अवेलेबल है आपको। Sicily में 120 minus 25 is a lot of delta P. Diastole में 80 minus 8 is a lot of delta P. So you've got a lot of delta P that helps in blood flow in the cardiac muscles of the right ventricle and the atria during systole and during diastole. Next point is the coronary flow is also decreased when the aortic diastolic pressure is low. हाँ जी, आपके पास एओर्टा में डायस्टली के दौरान प्रेशर 100 और से लेकर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक चलता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास डायस्टली में ब्लड जाता है। अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई है जिसमें एओर्टिक वाल्व इनकॉम्पिटेंट है और ब्लड जो आप लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पुश करते हैं वो वापस सारा का सारा एओर्टा में चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है, क्योंकि वेल्व बंद नहीं हुआ, तो आपके पास जो एओर्टा का डायस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत लो रह जाता है, मे बी 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, और उस वक्त डायस्टली में आपके पास डेल्टा पी बहुत कम हो जाता है, और इसी वजह से blood flow in the coronary blood vessels even during diastole when the ventricles are relaxed and capable of receiving the blood is decreased as compared to the normal. Now, the rise in venous pressure in conditions such as heart failure reduces coronary flow because it decreases the effective coronary perfusion pressure. So, coronary perfusion is going to occur because of delta P. तो अगर arterial blood pressure जो है वो आपका 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, लेकिन जो वीनस ब्लड प्रेशर है आपका, जो वेन्स जिन्होंने ड्रेन करके लेके जाना है, अगर वो भी 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए तो ब्लड फ्लो नहीं कर सकेगा, क्योंकि डेल्टा पी नहीं है आपके पास। कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और वेन्स में आपके पास ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होने की बजाय आपके 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर आ रहा है वेन्स के अंदर, क्योंकि हार्ट एम्प्टी नहीं हो रहा, तो फिर वीनस प्रेशर ज्यादा होने से डेल्टा पी कम हो जाएगा और परफ्यूजन कम हो जाएगी। These were a few points about the normal blood circulation in the coronary vessels, their control of blood flow, and certain factors during mechanical compression that would change the delta P, and the effect of vasodilation or vasoconstriction will be masked by this mechanical compression. Now we go on to the coronary vessels that have got some disease process going on in them, and because of that the blood supply of the heart cannot be changed by vasoconstriction or vasodilation to a great extent, because now the blood vessel is defective. The coronary artery disease, about 1/3 of all deaths in the industrialized countries of the Western world result from coronary artery disease, and almost all elderly people have at least some impairment of the coronary artery circulation. So it is one of the most important subjects in medicine. आपके पास बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिनकी कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें
कुछ ना कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुकी होगी, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिसिन का। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि डेल्टा पी आपने पहले पढ़ लिया, और ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये आपकी रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रही है। सो हम पढ़ वही रहे हैं, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर, एंड एट दिस टाइम वी आर सीइंग द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स to dilate or constrict according to the need that is being changed by coronary artery disease. This is a coronary blood vessel, and atherosclerosis is causing plaque to protrude into the lumen of the vessel, and it is decreasing the size of the blood vessel through which the blood has to pass. Now, when this happens, the blood coming from behind pushes this thrombus ahead, and it becomes a pedunculated thrombus, लंबा होकर ये आगे चल पड़ता है, and then it breaks up and can become an embolus. A thrombus that breaks up from its stem is called an embolus, and this is the place from where it was broken, and here is the place where it has lodged itself, and now it will block a smaller artery completely. So a larger artery can be blocked if this thrombus gets bleeding in itself, or a smaller artery will be blocked if the embolus is formed and goes ahead and blocks a smaller diameter of an artery. So gradual or sudden occlusion of a coronary vessel can occur by thromboembolism and atherosclerosis, and enlargement of the protruding plate in the coronary vessels diminishes coronary blood flow and triggers frequent bouts of transient myocardial ischemia. क्या मतलब है कि जब ये आपका इस तरह बड़ा हो गया है, उसकी वजह से रास्ता बंद होकर आपके पास फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया देता है।